An underground fire has been burning for over a century beneath India's largest coalfield. 2 decades of unrestrained open-cast mining has brought the fire to the surface with dreadful consequences for 750,000 people. Thousands of homes have already been destroyed, their inhabitants forced into squalid accommodation. Hospitals have been inundated with victims of toxic fumes. So what lies behind this appalling human and environmental disaster? See, this is Jharia, the coal fields of India. The Jharia that we knew when we were children. It was a very nice place, small town. Practically everybody knew each other. This was a kind of El Dorado at that time. People from all over India came and settled over here because they could make their fortune over here. And today, you look at the desolation of this place. There's a massive village over here. And look at what is left of the village. Today, this very coal has become a curse for us because fires actually engulfed this entire place. It's been exactly a century since underground fires were first ignited in the Jazeera coalfields. In abandoned mines that weren't decommissioned properly, coal was left to spontaneously combust. And since then, around 40 million tons of the fuel, worth billions of dollars, have gone up in smoke. Situated in East India, these coalfields are the largest in the country, covering 270 square kilometres. Nearly a tenth of this land is now regarded as unstable, thanks to the more than 60 fires burning beneath it. See, this here is crack because the fires has been gradually approaching, and as it comes nearer and nearer, the ground gets cracked up and then it will eventually fall. People have deserted this place because the fire has gradually gone under the houses. And it has become a place where people cannot live. 18 years ago, Ashok Agarwal and others set up the Save Jharia Coalfield Committee to help locals who are waking to find the fire literally on their doorsteps. खाना पीना कैसे चलता है? बस ऐसे जैसे पहले हाजिरी फाजिरी में चलता था। आस्ते आस्ते हम लोग जितना बार आते हैं देखते और बढ़ गया और आगे चला जाता है। वही बात, यही सब तो परेशानी हो रहा है। कितना आदमी भी यहाँ बचा हुआ है? 25-30 ठो। Jharia is vital to India's economy. Almost 70% of the country's electricity is coal-based. Plus, Jharia contains its main supply of prime coking coal, an essential ingredient in steel production. Whilst they were burning in underground mines, the fires weren't a big problem for the local population. But in the 1970s, the government-owned company Bharat Coking Coal Limited, BCCL, started open-cast mining here, digging the coal out from the surface. But it's only when BCL decided to go in for open cast mining. The idea was they'll get quick coal and they'll get cheap coal. With that idea, they started this open, which was actually not conducive to this place. There was underground mining already done over here. So there were a lot of galleries, Galleries are tunnels which these people make and they extract coal. The ground of the galleries is always full of small pieces of coal, and that catches fire. When you went in for open cast mining, where already underground mining has been done, you opened up the face of the galleries. And then there was a free flow of air inside. And now we've got a massive fire. The cavities the fires are hollowing out underground have created a treacherous landscape. The day before we arrive, a heavy digger falls so far into collapsing ground that only the body of its driver can be retrieved. And people like Malti Devi struggle just to keep their houses together. देखिए सब घर द्वार फटल है, सरकार कुछ भी नहीं दे रहा है हम लोग का, अपन बपौती जमीन है। Malti and her children live just meters from an open cast pit. इधर सब गिर जाएगा सर, देखिए सब घर द्वार फट गया है सर, चारों कोना देखिए फटल है, देखिए तो गिर जाएगा ना बरसात में, पूरा पानी पड़ता है।
घर द्वार फटल है, गरीब आदमी कितना मट्टी सीमेंट लगाएगा इसमें। देखिए यहाँ पूरा ऊपर वाला गिरेगा तो मरिए जाएगा ना, ये बच्चा को लेके हम सूता है सर। Apart from subsidence, houses like Maltese also take a pounding from blasts in the nearby mines. You see that there, it's something like smoke, but it's not really smoke. The blast has taken place over there just now to crack up the place, and that is the coal dust which is flying. And now this sort of blast takes place all the time. Jharia is one of the most polluted places in India, thanks not just to the usual byproducts of coal mining, but also to the myriad toxic gases released by the fires. These are all oxides of nitrogen, sulfur, and of course coal. There is a gas, carbon monoxide. That's a very poisonous gas. Sulfur dioxide is also poisonous to a certain extent. And then you have oxides of nitrogen. खूनी गैस से मर गया पति सर, टीबी धर लिया था। गरीब आदमी कहाँ से सुइया दवाई करेगा? नहीं दिया, सरकार कोई पैसा नहीं दिया है। 5 साल हो गया मरला सर, तो इसीलिए ठेकेदारी में खट के बाल बच्चा के चला रहा है। Tuberculosis and other respiratory illnesses are filling up the hospitals in the Jharia area. तो खांसी आ रहा है अभी, उल्टी अब तो नहीं हो रहा है। ओपन कास्ट क्या हो रहा है कि ब्लास्ट हो रहा है, एक्सप्लोसिव से उसको ब्लास्ट किया जा रहा है। तो ब्लास्ट जो हो रहा है तो उसका तो जो उड़ रहा है और डस्ट ही हो रहा है वो तो दूर तक फैल रहा है, उसका वाइड स्प्रेड है, तो उसका तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो भी वहाँ लोग रहते हैं 99% लोग इफेक्टेड हैं ही। किसी को टीबी हो गया है, किसी को दमा हो गया है, किसी को एस्बेस्टोसिस हो गया है, किसी को न्यूमोकोनियोसिस हो गया है। इसके अलावा एलर्जी, किसी को स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, रैसेज आ जाएंगे। और ये आग लगा हुआ है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिस पर अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है। मान लीजिए यहाँ से आप रेवेन्यू इतना देते हैं, इतना ये होता है, तो यहाँ के पब्लिक के लिए जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपरली जो है ना हेल्थ डेजर्ट जो हो रहा है उसको बचाने के लिए एक स्पेशल मुहिम चलना चाहिए। Things are unlikely to improve as Prime Minister Narendra Modi's government is seeking to double India's coal production to 1.5 billion tonnes by 2020. And so many in Jharia depend on it for their survival. On the bottom rung of the ladder here are those who sneak into the mines at night to scavenge coal, which is then hauled into town to sell on the black market. ये यहाँ से आप कोयला उठाते हैं सारे लोग? वहाँ से वो प्रोजेक्ट है उधर पीछे, यहाँ जाइएगा ना तो उधर से नीचे तरफ प्रोजेक्ट है। तो कब उठाते हैं? 2 घंटा हम लोग छूट देता है, 2 घंटा, 2 बजे से लेके 5 बजे तक। This is all illegal, but many would starve without it, and BCCL tends to turn a blind eye to the scavengers. एक दिन में कितना ऐसे कमाई हो जाता है कोयला से? उसे हम लोग लाते हैं निकाल करके यहीं पर, और साइकिल ले जाता है 300-250 में बेचते। आग आ जाएगा यहाँ पे तो आप लोग उठा देगा फिर? मतलब मार जाएंगे आग जी। अब हम लोग को चारों बगल से तो भागना है, ये सगरों से आग पकड़, हम लोग को सब कुछ छीना गया, लाइन भी छीना गया, पानी भी छीना गया। कोई दिन में जगह भी यहाँ छीना जाएगा। लेकिन आप लोग को तो बसा रहे हैं ना, बैलगाड़ियाँ ले जा करके उधर में दे देगा तो उधर में तो हम लोग भूखा मर जाएंगे। कोई रोजगार उधर हम में लोग के रहने की जगह देगा कि नहीं देगा? उधर रोजगार रहेगा तब न रहेंगे। Belgaria is the name of one of the new build projects the government and BCCL are constructing in order to evacuate up to 700,000 people out of the disaster zone that is Jharia. The scheme is known as the Master Plan, but has got off to a very slow start. In the 7 years since it began, less than 10,000 have been moved. It is managed by the JRDA, the Jharia Rehabilitation and Development Authority, which is overseen by the Deputy Commissioner for Dhanbad District. For last 1 year, I think there is lots of progress, but there are some other issues that we have to resolve with higher authority. That's why at some time the pace is very fast, sometimes it's quite slow. But even the few that have been moved are far from happy. The biggest problem is that thousands of urban families are being shifted to a rural area 15 kilometers away from where they were earning their livelihood. Bramlakam Bhuiyan is a former scavenger. ये आप बैलगाड़ियाँ देखने चाहते हैं तो आप देखिए कैसा यहाँ रह रहा है, देखिए यहाँ का संख्या
देखिए कितना है, देखिए आप संख्या देखिए कितना है संख्या। आज इतना संख्या का कोई रोजगार नहीं है। ले जाओ रहो आनंद से। यहाँ खाली यहाँ बिल्डिंग देख देख के रहेगा आदमी, खाली बिल्डिंगें देख देख के सब चटेगा बिल्डिंग। यहाँ बगल में होना चाहिए हॉस्पिटल, यहाँ रोजगार होना चाहिए, कारखाना होना चाहिए। ये सब सरकार इस पर ध्यान ही नहीं कर रहा है। सरकार को गरीबी हटाओ तो कहा यहाँ गरीबों का हटाएगा, अमीरों को उठा रहा है, गरीबों को नीचे गिरा रहा है। See, livelihood issue is there, but this was much bigger when first lot of people was shifted to Bulgaria, because Bulgaria itself is emerging as a market, because so many people will reside there. Apart from that, we are giving 2 years minimum mandate for 500 days. These 500 days of minimum wages are less a gift than a guarantee of work for that length of time. Usually on the construction sites they've been moved to. And that minimum wage is less than even scavengers like Ramlakan were earning before. 170 रुपये में खटते हैं मजदूरी में, जो कि हम सब 400-500 रुपये खटते थे। यहाँ ना कोची रखने का जगह है, ना बकरी रख सकते हैं, ना मुर्गी रख सकते हैं। चल भाई उसी से हम गुजारा करेंगे, कुछ पैसा आमदनी होगा। वो भी तो नहीं है, रखने की जगह यहाँ मिला। सबसे बड़ा चीज़ है पेट। पेट का कुछ उपाय नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा। Other problems include a scarcity of basic amenities like education or healthcare. So first task was to convince the people that they are in the danger and it's in their benefit to shift to Bulgaria or some other sites. So that issue has mostly been resolved. So now we'll go for that school and hospitals and other facilities over there. There seem to have been quite a few oversights in the master plan. Quality control is another one. This tower block was only built a year ago. पलस्तर है, ऐसा ऐसा पलस्तर करेगा, ऐसे टिकेगा। देखिए तो अब ये झर रहा है। यहाँ पर 3 तल्ला है, लेकिन 4 तल्ला से पानी आ रहा है नीचे 3 तल्ला। ऐसा बना के दिया है। हम लोग जहाँ थे वहीं ठीक थे, लेकिन यहाँ आके देखिए न घर के ठिकाना है, न काम का ठिकाना है, कुछ नहीं है यहाँ पर। Are you keeping the tab on quality, sir? Sometimes we also receive complaints, but no specific complaint is there. If there is some complaints with the building, that can be rectified, that can be rectified. See, when we rehabilitate people from one place to other, this type of problem emerges. But if you look at the structure of their houses in the original places, that is also not so nice or so big. But this isn't how many people in the new build see their old homes. Just down the road from Bulgaria, a similar settlement called Karmatand is under construction. हाँ, देखिए हम लोग यहीं से पानी भरते हैं। गंदा पानी भर के पीते हैं। जब हम लोग को बिजली बाती उतनी नहीं रहता तो यहीं से पानी भर के हम लोग ले जाते हैं। इतना दूरी हम लोग को, जबकि नल विशेषण लगा के दे दिया है घर में, मगर पानी उसमें चलवे नहीं करता। देखिए एक रूम यहाँ पर ही हम लोग का है, एक रूम ही है। देखिए सामान रखने का कोई जगह नहीं है। 4 गो बच्ची है, 2 गो लड़का है, 2 गो पुतो है, 2 गो पोता है, 1 गो पोती है, 2 प्राणी हम लोग हैं, 1 सास है। तो इतना छोटा घर में कैसे रहते हैं? मजबूरी में रह रहे हैं हम लोग। झरिया में आपका घर बड़ा था? हाँ, झरिया में हम लोग को अपना मकान बनाए थे खपड़ा से। 3 गो 4 गो रूम था हम लोग को। वहाँ पर सुविधा भी, हम लोग को पानी का सब चीज़ का सुविधा था। हम लोग को वहाँ से प्रबंधन ज़बरदस्ती वहाँ से तोड़ उड़ के हम लोग को हाजिर उजिर बंद कर दिया। मजबूरी में हम लोग को यहाँ पर कर्मटर आना पड़ गया हम लोग को। In Karmatand, as elsewhere, the master plan has been moving slowly. और अभी हम लोग 6 साल 5 साल से रह चुके हैं। पहले इस इलाका में जंगली इलाका था, या कोई चीज़ का सुविधा नहीं था। और हम लोग को बगल में हम लोग को प्रोजेक्ट जो बना दिया सीमेंट वाला और गिट्टी वाला, उससे इतना धुला उड़ता है कि हम लोग को जीना है यहाँ पर हराम कर दिया। पूरा सीमेंट का हम लोग को गैस खाना पड़ता है। The frustration of the resettled here is nearly matched by that of the construction company, who are the first port of call for their complaints. कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो ईटा की गाड़ी आएगी, बालू की गाड़ी आएगी, मट्टी यहाँ से कुड़ा के वहाँ जाएगा।
ये तो इतना थोड़ा सफ़र तो करना होगा, और हम बना रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए। सरकार इन लोगों को उठा के लाया कि नहीं वहाँ से ड्यूटी नहीं, पक्का का मकान से यहाँ से ड्यूटी जाओ, यहाँ सुविधा दिया गया, मगर वो मूलभूत सुविधाओं को भी नहीं, इन लोगों को और चाहिए। तो इसमें तो जब तक बनेगा नहीं सर, तब तक तो पूरी तरीक़े से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या मिला। It remains to be seen whether these settlements will eventually create their own source of livelihood and commerce. But there is another group in the area who feel that these have already been taken from them. The peasant farmers who owned the land which is being built on. देखिए यह बेलगड़िया बस्ती और इस गांव की 300 से अधिक एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ। Ramesh Rahi is a local politician and activist fighting for the rights of the villagers. ये जो गरीब आदिवासी हैं, मैं फिर कहूँ कि इनका जो अपना एकमात्र रोजी रोटी का साधन ज़मीन है, उसको छीनने का काम कर रही है सरकार। BCCL bought much of this land in the 1980s for the Mukunda opencast mine project with the promise of local jobs. In the end, the project was scrapped, so the farmers continued to till the land. Then in 2009, BCCL and the JRDA started to encircle the village with tower blocks for the refugees from Jharia. ये देखिए बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, बहुमंजिले बिल्डिंगें बन रही है। इनकी ज़मीन पर, इन किसानों की ज़मीन पर जो खेती थी, वृक्ष थे बड़े बड़े, जिनको काट दिया गया और उस पर ये बिल्डिंगें बनाई जा रही है। और ये जो बिल्डिंगें बन रही है, इसमें वही लोगों को बसाया जाएगा जो कोलियरों के आसपास से लोग आए हैं, और इनकी जो ज़मीन थी उन्हें हटाया जा रहा, रिफ्यूजी बनाया जा रहा है। आपके मुकुंद ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जो इसीलिए दे रहे थे, जो हम लोग को गांव का जो आदमी है आसपास का, जो हम लोग को रोजा चले, यही जो हम लोग को जो कॉलोनी बना रहे हैं, तो ये हम लोग को समस्या हो गया। जो हम लोग अब खेती कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, तो हम लोग उस समय जो था उस समय अभी नहीं लेंगे। अभी हम लोग नया सिरा से पेमेंट कीजिए और जितना है मैंने एकड़ हिसाब से हम लोग को नौकरी दीजिए। कानून कहता है कि जिस काम के लिए ज़मीन ली गई उसका उपयोग उसी के लिए होना चाहिए। दूसरा का उपयोग यदि आप करते हैं तो आपको पुनः मुआवजा देना है, उसकी सहमति लेनी है किसान की। In his office in the district capital Dhanbad, Ramesh has been inundated by villagers bringing him their grievances. गांव के किसान, झारखंड के किसान, यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, वो काफ़ी नासमझ, यहाँ BCCL जैसी कंपनियों ने लाभ उठाया और उस समय इन्हें मौखिक रूप से कहा गया कि आपको नौकरी मिलेगी। अब जबरन पुलिस के बल पर, गोली बंदूक के बल पर उन किसानों की ज़मीन सरकार हड़प रही है। यही हम मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ दिन लड़ाई किए हम लोग ज़मीन के बारे में। जो हम लोग को ज़मीन था, दो पूरा लेबलिंग नहीं करने थे, हम लोग चाष करेंगे, खाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। तो आके लड़ाई किए, तो उस समय हम लोग को 10 आदमी को, 6-7 आदमी को जेल डाल दिया। In the nearby village of Nipania, the JRDA has been acquiring land for another settlement, and farmers have started a sit-down protest. Construction hasn't started here yet, but the grievances are similar to those in Bulgaria. The exchange of land for jobs that haven't materialized, and a general sense of being cheated by the authorities. धरना हम लोग को 2-3 महीना लगभग हो चुका। जब से हम लोग धरना स्थल में हैं, तब तक आज तक कोई अफसर नहीं हम लोग को झांकने के लिए आए। सरकार की ओर से जो पूर्ण रूप से सभी भूमि जो है खेती वाला जमीन है, फिर भी यहाँ 50% इसमें दिखाया है बंजर, और बंजर इसलिए दिखाया है ताकि भूमि अधिग्रहण का जो बिल वो पास करेंगे वो आसान होगा। एकड़। Both of these are government reports, but within 4 years, the amount of barren land jumped up from 7.5 acres to 60. And by law, the government can force people to sell in fertile land. और ये कृषि जो भूमि अगर हमारा अधिग्रहण हो जाता है, तो गांव के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके बाल बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, उनका पढ़ाई लिखाई नष्ट हो जाएगा, वो जो है भूखमरी उत्पन्न हो जाएगा गांव में। Non-violent though this protest is, local police have still threatened to charge these people with breach of the peace. And the man in charge of the JRDA isn't bending. अब उनका कहना है कि नहीं साहब, जैसे आप पहले बोल रहे थे कि इन लोग हमारा खेत क्या है, खेत क्या है, उस जमीन पर एक प्लॉट पर मैं अपने गया
और प्रयास यही हुआ कि जो भी जो है जो अच्छा खेती वाला ज़मीन है उसको लोग नहीं, और कुछ जो भाग लोग दिखाया नहीं, तो सवाल कि बीच में जो पड़ जाए तो वो लेना हमारे मजबूर। हमारी ज़मीन पर आप इनक्रोच किए हुए हैं, GRDA की ज़मीन पर वो इनक्रोच कर रहे हैं, ट्रेस्पासर्स हैं अभी। One of those trespassers shows us some of the land the JRDA wants to build on. ये जो हम लोग खेती जो ज़मीन को जरेडा बंजर बोल के ज़मीन को अधिग्रहण कर रहा है, हम लोग ज़मीन किसी हाल में नहीं देंगे, जान दे देंगे, किंतु ज़मीन हम लोग किसान नहीं देंगे। This is clearly fertile land, yet many villagers took the money offered by the JRDA. पैसा तो हम लोग को गलत ढंग से दिया गया, डरा धमका के पैसा नहीं लीजिएगा तो जमा हो जाएगा। हाँ, सब कोई थोड़ा पैसा उठाए, केस कर देंगे। जमीन अब पैसा नहीं लीजिए तो केस कर देंगे। पैसा लीजिए, चलिए पैसा लीजिए तो पैसा जमा हो जाएगा, तो फिर जमीन आपको छोड़ना पड़ेगा। कई जनरेशन उस जमीन से खाते आए हैं, वही उनका इकलौता सोर्स रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड है वो। सर देखिए, हम बता रहे हैं उनके विषय में, हम ये नहीं करेंगे अपना, वो अपने तरफ से सही बोल रहे हैं। मैं इस कुर्सी बैठा हूँ, मैं अपने तरफ से सही बोल रहा हूँ। हो सकता मैं भी वहाँ रहता तो उसी तरह से बोलता, लेकिन है वो तो बात है, पैसा मिल रहा है, अगर पैसा बचा कर रखेंगे तो कुछ कर सकते हैं वो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन में निश्चित रूप से कहीं बचता है तो कहीं उजड़ता है। रोमियो वाज नॉट बोल्ट इन ए डे, और ये भी निश्चित रूप से बता रहे हैं कि वहाँ हम लोग टाउनशिप बनाएंगे। स्टेशन उनका हो रहा होने तो टाउनशिप हम बनाएंगे। ये जोर जबरदस्ती नहीं होगी। जोर जबरदस्ती की बात कहाँ हो रही, जो कानून अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप घर में बैठेंगे। ज़मीन हमारी है तो हम अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए तो लड़ेंगे। यहाँ जनता जागी हुई है, लड़ रही है। अब देखा जाए, वो आगे हैं कि हम आगे। Whoever wins in Nipponir, it doesn't seem that the fires that may yet create 2 waves of refugees are going to stop burning anytime soon. Ashok Agarwal suspects deeply cynical motives. If you go around the whole of this Jharia town, the entire Jharia coalfields, you will never see firefighting going on anymore. That is something which BCL has not done. And if you ask me, they have not done it deliberately. Why do you think so? Why? Because you see, they've got a vested interest in the fire. As the fire travels underneath, you see more and more places become dangerous. So people have to be evacuated. Once the people are evacuated, then they get the entire place for expansion of the open cast mines. So that is why they don't want to douse this fire. BCCL declined our request for an interview. So for another opinion on why the fires haven't been put out, we turned to a scientist from India's Central Institute of Mining and Fuel Research. He only agrees to talk to us in an unofficial capacity. I think it can be dealt within 3-4 years. 3-4 years. But infrastructure, manpower, and decision making, quick decision making, everything combined effort is required. What is stopping this from happening? Actually, this is the totally policy decisions. Policy decisions. We are not policy decisions. We are simply scientists. BCCL is owner. Coal company is owner. We can only tell that we have the technology to deal the fire, but ultimately they are the owners. They need production, they other things. Their priority is production most rather than safety. We've also heard that it's in the interests of BCCL to keep some fires burning so that they can move people off their land. But we cannot say on camera this thing. No, but we cannot say this thing on camera. Whatever the truth behind the matter, Ashok is resigned to the end of the town he grew up in. Eventually, Jharia will die. It is destined to die. The way BCL is going on and they want to double the production by 2020, in that case, more and more mining will be done over here, and many more villages will have to be shifted. So eventually, this place is going to become absolutely desolate. Yet the struggle continues to get BCCL and the government to take responsibility for letting this conflagration rage out of control and for putting hundreds of thousands of lives in the line of fire.